Okay, so now in this revision and doubt solving session, now first of all you need to know ki how much marks are are how much marks questions are asked from this chapter, okay, in your board exam. So from this chapter, 8 marks is the weightage. So questions what will be asked to you are 1 plus 1 plus 3 plus 3. It means one MCQ, one mark answer in short, section B, and then 3 marks. 8 minutes, let me check then. Yeah, okay. 3 marks, 2 questions. So that is how it will be of 8 marks. Now, very scoring, and the time taken to score 8 marks is extremely less. It may be less than 8 minutes. So you have to really focus. Secondly, as I told you, less chances that full-fledged sum may come. So what will come is mostly journal entry. So for you, scoring again becomes easy because you don't have to do long calculations. Now, very important for you in this chapter is illustration 1. So come to page number 286. Come to page number 286. Okay, now in 286, just have a go through, and if you have any doubt in any of the adjustment, then do let me know. Again, illustration 1 is one of the most important question. Okay, let's go to the second one. Now, all these things are already there in my video lecture. I have solved everything in detail, but still if you have not been able to understand, then you can ask now. Now, second, at the time of dissolution of the firm, total assets are 4 lakh. Out of that, 40% are current asset, where cash is included of 20,000. 120% of fixed assets are realized, and 80% are realized from current assets. So again, extremely important question number 2. Please mark it. Now, were you able to do this sum? Were you able to find out fixed asset, current asset? किसी को इसमें कोई doubt है? You can raise your hand from the system because I may not be able to see all of you. So if you have doubt, you raise the hand. I will solve it out for you. Okay. So this is question 2. Mark it extremely important. Then now I hope you all are comfortable with partner taking over asset. So in the third one, machinery ka value is given, taken by one of the partner. So first step is we transfer machinery to realization account, and thereafter taken over by partners. So partners capital account will be debited and realization account will be credited. Now, very important, all of you, please pay attention. You guys will not miss out the narration. If such a question comes, you can see how it is attempted in the illustration. So you have to follow the same format. खुद का कुछ नया format मत बनाना. यहाँ पे heading खा गए, LF column नहीं बनाया, narration नहीं लिखा. ऐसा सब करोगे तो marks कट जाएंगे. Entry भले सही हो. If you ask me, if you have not written narration, your entry is incomplete because narration is part of the answer. अगर ऐसा कहा है question में don't write narration, then it is okay if you don't write. Otherwise ऐसा assume करना कि narration लिखना ही है. They are part of the entry. Now, dissolution expense, तो very simple, जो भी खर्चा होगा वो realization में जाएगा. So realization to cash या
bank. Now, in the fifth one, see the important point is you please underline no value is realized. Just a minute. Please underline no value is realized for goodwill. Okay, this is the important point. So you transfer all the assets to realization account, and from there, building you are realizing, furniture you are realizing, machinery you are realizing, but for goodwill, nothing is to be done. So you have to exclude goodwill when you pass the entry for realization of assets. Next, Nandita, where are you? You look lost. ओके कैमरा ही बंद कर दिया बढ़िया ये अच्छा तरीका है ओके नाउ लेट्स प्रोसीड राहुल आर यू एबल टू अंडरस्टैंड तनय हेत ओके नाउ सिक्स्थ वन देखो bad debts of 12,000 was written off out of it 10,000 is received तो यहाँ पे bad debts were earlier written off but अब हमें 10,000 मिल रहा है तो डायरेक्टली वी पास एंट्री फॉर 10,000 सो कैश कम्स इन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट नेक्स्ट नाउ 7 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो प्लीज mark 7th important now there is no value of goodwill in the books of firm but at the time of dissolution 35,000 is realized for it now goodwill was not there in the books of accounts still we got something out of that so directly your entry will be cash or bank account debit to realization account credit. Please mark it most important. 7th one. Next. Now 8th one, partner Naresh accept to pay for bills payable. Now स्टूडेंट हाउ टू मेक अ एंट्री फॉर दिस बहुत सिंपल है बिल्स पेएबल का बैलेंस हमेशा बिल्स पेएबल लायबिलिटी तो क्रेडिट होता है तो बिल्स पेएबल को करेंगे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट दिस इज द एंट्री फॉर दिस नाउ over here we have bills payable and liability in our books of accounts so here the first step is we transfer bills payable to realization account and then realization to Naresh capital account. We'll pass separate entry, okay? Don't pass a combined entry. Pass two separate entries because textbook hai to we follow the textbook. And partner ने accept किया है bills payable pay करने के लिए तो all the liabilities are as such first transferred to realization account. Next. At the time of dissolution, of firm, debtors are 80,000 and creditors are 40,000.
Partner Pratik accepts debtors at 20% less than book value and paid to creditors. Now, again, mark this important. This is what we have also done in the questions what we have solved in our lectures. So, mark this important. Let's see. Now, over here, first, we transfer debtors and creditors to realization account, and thereafter, partner accepts debtor at 20%. So, partner's capital account will be debited or current account will be debited, and realization account will be credited. And we paid to creditors. So now, and the partner paid to creditors. So what we do is realization account will be debited, but instead of to cash, we credit partner's capital या current account. So ninth also please mark it important. Okay. 10th one, extremely important, please mark it. Partner Vijay accepted responsibility for dissolution procedure of the firm. A firm has decided to pay remuneration 12,000 for this task. A firm has paid him rupees 6,000 for expense. Now, partner accepted responsibility for dissolution process of the firm. फॉर्म ने नक्की किया कि इसके लिए हम उसको पगार देंगे 12,000 का. सो नाउ जब ये डिसाइड हो गया तो उसको 12,000 देना है, तो बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 12,000. फॉर्म हैज पेड हिम 6,000 फॉर एक्सपेंस. तो यहाँ पे पे किया है तो बहुत सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश और बैंक अकाउंट विल बी credited. So mark this very important, please. Mark this very important. Okay, 11th one. Income tax liability of partnership firm is determined at 35,000. It is not recorded in the books. So now we have to pay this liability which was not in our books of accounts. So cash goes out and realization account debit. At the time of liquidation, now this is simple, you can do it on your own, we have done so many. अनरिकॉर्डेड मशीन बेचा. अनरिकॉर्डेड मशीन हम कैसे बेच सकते हैं जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है? कोई मुझे बताएगा? या वो बुक्स में है ही नहीं, उसको हम कैसे बेच सकते हैं? अनरिकॉर्डेड कैसे हो गया? क्या हमने 2 नंबर के पैसों से खरीदा इसको? अनरिकॉर्डेड कैसे हो सकता है भाई? कैन एनीवन टेल मी? Or due to depreciation. So what happens due to depreciation? We depreciate the value of machine every year, and so the balance comes to 0. Okay, very good, very good. And then because it has become 0, it is now not in our balance sheet, but physical existence of that machine is there in the business premises. So we sell that and we realize the money, and that is why we call it unrecorded asset. Understood this, all of you? पता चल गया का क्या कहा आकृति ने कि घर पे एसी है, ओके 10 साल हो गए, हर साल डेप्रिशिएट किया, ओके अब उसका बुक बैलेंस, उसका बैलेंस हो गया 0 बुक्स में, पर मशीन तो चल रहा है. अब उसको बेचेंगे तो कुछ तो पैसा आएगा, तो बुक्स में नहीं है पर पैसा रियलाइज हो रहा है. दैट इज व्हाई वी हैव अनरिकॉर्डेड असेट्स. ओके, नेक्स्ट.
Okay, now 14th. On due payment of 35,000, unrecorded furniture of 20,000 given to Mahesh, the remaining amount is paid in cash. On due payment of 35,000, 35,000 मुझे पे करना था, तो मैंने अनरिकॉर्डेड फर्नीचर उसको दे दिया जो बुक्स में ही नहीं था, तो बुक्स में था ही नहीं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो 20,000 का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर दिया और 15,000 हमने कैश में दिया, एंड दैट इज व्हाई द एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश और बैंक. प्लीज मार्क इट इम्पोर्टेंट. Please mark it important. Okay. Now 15. One partner accepts to pay loan of his wife 40,000. कोई ऑप्शन ही नहीं है बेचारे के पास. ओके, सबसे पहले उसको उसके वाइफ के पैसे देने ही पड़ेंगे. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट, एंड रियलाइजेशन टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. यहाँ पे कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते थे, पर अलग अलग किया है टेक्स्ट बुक में, तो वी आल्सो फॉलो द सेम. कंबाइंड एंट्री कैसे कर सकते थे कि श्रीमती लोन अकाउंट का अलग से ही अकाउंट बना दिया, वहाँ पे बैलेंस क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया और डायरेक्टली टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके उसको क्लोज किया. बट अलग अलग किया है तो थ्रू रियलाइजेशन ही हम रूट करेंगे. नाउ you can see note is given during formation of question paper. In question paper for preparation of journal entry and realization account, maximum 10 adjustments should be given. In question paper for preparation of journal entry, necessary accounts and balance sheet, maximum adjustments should be given. But as you know कि ऐसा नोट दिया है, बट ये चैप्टर का वेटेज ही नहीं है भाई इतना कि इसमें से ऐसा कोई बहुत बड़ा फुल फ्लेजेड सम आ सकता है. तो बहुत बड़ा फुल फ्लेजेड सम हमें करना है फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ द कंसेप्ट. ओके, एग्जाम में इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है कि बैलेंसेस दिया, एक छोटा बैलेंस शीट बना लो, छोटा रियलाइजेशन, छोटा पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक, ऐसा आ सकता है. बट बड़े बड़े सम्स एक्सपेक्टेड नहीं है, तुम्हें करने चाहिए फॉर प्रैक्टिस, और किए भी है हमने. ओके, नाउ directly go to now in the illustrations. Anyone has any doubt? Were you able to do illustration 7 which was given to you? Okay, 8 so we have done it in the class, in the lecture. now okay, MCQ किया है सबने इसका, सिर्फ आंसर देख देख के टिक मत कर देना, प्रॉपरली करना, बिकॉज 1 मार्क का एमसीक्यू है और आंसर इन 1 लाइन. ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1-1 मार्क का एक्सपेक्टेड है. इवन द थर्ड वन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पे आ जाओ. 3 का 4 पे आ जाओ. क्वेश्चन 3 का 4 पे 310. Now all these are there in my video lecture and I'm sure तुम लोग ने देखा ही होगा. Still I thought I will revise it once again for you because ये chapter बहुत ही scoring है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम इसको ignore कर दो. ये बहुत ही important है score करने के लिए. Now question 4 देखो. How would you deal with the following balances disclosed in the balance sheet at the time of dissolution of partnership firm? Explain. Now over here, general reserve का हम क्या करेंगे? You can give a reply. General reserve का हम क्या करेंगे? Partners in partners capital account. Sorry, can you repeat once again, please? Distributed to partners. Okay. In partners capital account. Distributed to partners in partners capital account. Okay. Now
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या करेंगे? सब लोग किसी का इंतजार कर रहे हो जवाब देने में? जवाब दो ना भाई, तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, पावर इज इन योर हैंड। अनम्यूट करके जवाब दो। Sir, balance of investment fluctuation fund will be credited to क्रेडिटेड partner's capital पार्टनर्स account. कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। नाउ जिन्होंने एक बार जवाब दे दिया प्लीज अब जवाब मत देना, बाकी सबको चांस दो। ओके। थर्ड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड का क्या करेंगे हम? चलो फटाफट अनम्यूट करके आंसर दो। Distributed between partners. It will be distributed between partners. Now in what ratio, Umesh? Profit sharing ratio. Sorry, what Profit ratio? sharing. Profit sharing. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके। प्रोविडेंट फंड का क्या करेंगे हम? क्या प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में? Record in liability side. It is a liability, so it will be closed and transferred to realization account. Okay. Okay, Faiza. Then debit balance of profit and loss account. Fastest finger first. Fatafat, come on. Debited to partner's capital account. Partners capital account will be debited and profit and loss account will be credited. Okay. Depreciation fund क्या है? पहले मुझे ये बताओ कि रिजर्व है, प्रोविजन है या लायबिलिटी है? प्रोविजन। यस, तो क्या करेंगे इसका? Credit side of realization account. Okay, it will be closed and transferred to realization account. Okay, चलो बढ़िया। Now पेज 311 में क्वेश्चन नंबर 5, पेज 311 में क्वेश्चन नंबर 5, total asset are 1,50,000 of the firm A and B, where cash of 10,000 is included. Net asset of the firm are 1 lakh. Ratio of capital and reserve is 4:1. The capital of A is more than of B by 20,000. Loss of realization is 20,000. Firm is dissolved. Prepare opening balance sheet and ascertain opening capital of A and B. चलो चालू पढ़ जाओ, चालू पढ़ जाओ। और मुझे कितना कैपिटल है, कितना रिजर्व है, कितना ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और कितना रिजर्व, मुझे आंसर दो। मैसेज करना आंसर। Mark it very important for exam. In this sum, your loss of realization account is given, but you don't have to make realization account. You just have to prepare an opening balance sheet and ascertain opening capital of A and B. But you can even make a realization account, partners capital account, cash and bank for practice. Okay, you can do that. Dia, your answer is correct, but reserve you have not mentioned. Okay. In fact, question number 6 में यही कहा है, prepare realization account from question number 5. तो जिनका हो गया, I can start making it. Vaishnavi, correct. Chalo. Now, question number 7. Now, in question number 7, yes, again you have to mark this important. Total asset of the firm at the time of dissolution is 2 lakh, out of which 40% are current asset. So,
total asset two lakh, of which 40% are current. So current asset 40%. So 40% of 2 lakh is 80,000. Okay. And obviously 60% are fixed assets. So 1,20,000. But what is given is out of current asset, 10,000 is cash. So minus cash. So 70,000 is other current asset. Now you have to pass journal entry. So your journal entry will be with first will be realization account debit, fixed assets account will be credited, and current asset account will be credited. And then you realize 120% of fixed assets, so 1,44,000, and 80% are realized for current asset, so 56,000. So cash account debit to realization account credit. Please do this working. Done all of you? Done all of you? Write the entry, scribble the entry. Then you can do fair later on. Now question 5. Again, now all these are really important. That's why I'm discussing it right now. So that I'm sure तुमने lectures देखे ही होंगे. But फिर से एक बार तुम्हारा revision हो जाए live class में. अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं पता चला तो you can clarify right now. Now in question number 5. Pass journal entries for the following transaction. Again, ये हर एक थियरी जैसा क्वेश्चन दिखने वाला या शॉर्ट जर्नल एंट्रीज वाला सब तुम्हें करना है. नाउ फर्स्ट वन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000. नो अमाउंट इज रियलाइज. तो क्या करेंगे, गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट. और रियलाइजेशन का कोई भी एंट्री आएगा नहीं. देन second you will be able to do third, very similar to what we have done. Video lecture में सब कुछ है ही, तो you can go through it in case okay you want a revision for that. Now fourth one, again goodwill is not disclosed but 50,000 is realized, so cash account debit to realization account credit. Value of laptop is 35,000. One partner has taken it for 25,000. Fifth one, so value of laptop is 35,000. So 35,000 will be transferred to realization account debit to laptop account credit, and partner has taken it for 25. So partner's capital account debit to realization account credit. Then partner has accepted to pay loan of Srimati. We have already seen this before. Income tax now payable, we have seen before. Surplus, this is very much similar to illustration 1. Okay, but 10th one I would like to discuss with you. One partner has accepted responsibility to undertake dissolution. In return of it, decided to pay remuneration 20,000. On account of expense, firm has paid him 12,000. The first entry will be realization account debit to partner's capital account credit 20,000, and then partner's capital to cash or bank 12,000. Total debtors 1,20,000 and 60,000. Similar we have already seen in illustration, and then 12th also we have already seen. So I think you will be able to do this. If you have any doubt, you can raise your hand. If not, we can go to the 6th one. Second, partner Bimal has accepted to pay bills payable of 15,000. So first in this, again you transfer bills payable to realization account, and then
partner Bimal has accepted to pay. So realization, you first pass the first entry, bills payable to realization, and then realization account will be debited and partner Bimal's account will be credited. Pass bad debt was written off 11,000, out of which 6,000 are recovered. तो किसका एंट्री पास करोगे, 6,000 या 11,000 का? एंट्री किससे पास करोगे, 6,000 या 11,000 से? 6,000. 6,000 exactly. So cash to realization account. Then I think that's it from this. Okay, now come to the seventh one. Now seventh one, you have to prepare necessary accounts to close books of the firm. Now information is given. Now information is scattered because balances दिया है. So first you will have to make a balance sheet. Okay, and then you start closing it. दिया ही है balance 50% are realized from asset of the firm. तो जितना भी asset तुमने find किया उसका 50% realize कर लो, liabilities को pay off कर दो, और dissolution expense pay off कर दो, find out profit or loss, transfer it to partners, capital account and close. So you have to do seventh one. Please do this once again as your homework. किसी को सेवेंथ में डाउट है? तुमने किया ही होगा, होमवर्क में दिया था मैंने. ओके, देन एथ वन. अब ये जो एथ वन है ना, इज बेसिकली अ फुल फ्लेजेड सम. मार्गी आ एथ में तने डाउट હતો બેટા? हाँ सर. यही है वो. ओके, नाउ you can see that eighth one is a full-fledged sum, but over here again information balances are given. So what I want you all to do in this sum is, because a full-fledged sum, it cannot come in exam for 3 marks. So what you do is you at least make a balance sheet for the same, okay, as a practice. Understood? Now, right now at your home, you can make a balance sheet and very well you can complete the full-fledged sum, because it will help you to make your concept stronger. तो तुम खुद कर ही सकते हो. I have solved this in my video lecture only till the preparation of balance sheet, because rest all I had given it as homework. So what you do, you prepare the balance sheet, take care of the adjustments. It's very similar to illustration, I think 8 or 9 what we did. So you please do this, okay, as a practice. Now, uske baad, yeah, I think that's fine. So just go through it once again. See if you have any doubts. Okay, now doubts होगा तो मुझे पूछ लेना, okay? अभी नहीं तो जब खुद करो और डाउट आया तो मुझे पूछ लेना, या मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे सेशन होते ही रहते हैं तो पूछ लेना मुझे. नाउ कल से मैं फाइनल अकाउंट्स चालू करूंगा, और आज मैंने तुमको दिया है लेक्चर 1 देखने के लिए. तो लेक्चर 1 सब प्लीज देख लेना सिंसियरली, बिकॉज उसमें पूरा बेसिक्स मैंने फिर से एक बार रिवाइज कराया है. उसमें मैंने एडजस्टमेंट्स भी सब डिस्कस की है, तो वो सब तुम एक बार देख लेना. कल जब तुम आओगे मेरे लेक्चर में, उसके पहले लेक्चर 2 भी एक बार देख के आना. इज दिस क्लियर? अच्छा, let me brief you once again for those who are facing difficulty in final accounts in 11th standard. Now तुम अपने आप को assess करो, और तुम्हें लगता है कि ये final accounts हमारा इतना strong नहीं था, तो तुम क्या करना, मेरा लेक्चर तो देखना, पर उसके साथ स्पेसिमेन दिया है, यानी फॉर्मेट दिया है ट्रेडिंग अकाउंट का, पीएनएल ऐप का, पीएनएल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल. तो एक बार ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये तीनों, एटलीस्ट ये तीनों, एंड द बैलेंस शीट एक बार लिख लेना. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आई थिंक शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल.
इवन पीएनएल ऐप भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रेडिंग पीएनएल ऐप भी साथ में लिख ही दो, और बैलेंस शीट, ये चार एक बार लिख लो, दो तीन बार पढ़ लो, ताकि whenever you see a account in trial balance, immediately it should hit you whether it will go to trading, PNL, or it will go to balance sheet. Is this clear? जनरली पीएनएल ऐप में जो आएगा वो एडजस्टमेंट में दिया होगा जनरली, बट पीएनएल ऐप भी एक बार लिख लेना. चैप्टर 1 व्हाट वी डिड of accounts part 1, usme we had done sums where we prepared partners capital, partners current, P&L appropriation. So those sums also you go through it. Now तुम्हें go through करने के लिए बुक खोल के भी कर सकते हो या मेरा वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो. तो एक बार ये सब रिवाइज कर देना, एंड कल का लेक्चर में जो सम है हो सके तो वो सम पहले एक बार सॉल्व कर लेना बिफोर यू कम टू माय lecture, so that you know where you are facing difficulty. So while I help you with the sums, you can be clear in what all doubts and difficulty you had, what was the blockage over there. Okay, so एक बार फाइनल अकाउंट्स थोड़ा होल हार्टेडली करना, बिकॉज 11 मार्क्स का एक ही सम आएगा, उसमें तो कोई थियरी नहीं आने वाला है. मैंने एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व किया है ताकि तुम्हारा एडजस्टमेंट्स के कंसेप्ट्स, फाइनल अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए या रिवाइज हो जाए. पता चल गया सबको क्या करना है? ऐसा तो एक काम करो, आज के होमवर्क में ट्रेडिंग, पीएनएल और पीएनएल ऐप, पार्टनर्स कैप और बैलेंस शीट लिख ही लो. ये मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तुम लोग नहीं लिखोगे, तो आज के होमवर्क में वो लिख लो. मैं तुम्हें अभी मैसेज करता हूँ ताकि एक भी होमवर्क होगा तो एटलीस्ट तुम वो एक बार लिख लोगे. जिनको नहीं आता है वो एक बार नहीं 2 बार भी लिख सकते हैं, 2-3 बार पढ़ सकते हैं. ओके, थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो आज के लिए फिर इतना ही. किसी को डाउट डिफिकल्टी हो तो यू कैन स्टे बैक, और बाकी सब देन बाय बाय.